Hello dear student, good morning. And the concerned teacher present in the class, this is Sankar Sahu from Government High School Sargipali. Welcome to everyone to this live class from Virtual Studio District Education Office Sundargarh. Dear student, I hope all of you are fine. So let's begin our revision session because our examination is very close and we are supposed to be prepared well and we are supposed to do well in the examination. So I, with the first revision lesson from English portion we can say, so today I am going to cover two chapters and the first chapter is the priceless gift and the second one from a grammar portion, one particular chapter, that is the parts of a sentence. So dear student, you need to prepare well for the examination and whatever the doubts and the queries you have, we will solve in this session. Your other particular chapters also it will be conveyed to you through this virtual platform. So dear student, without delay any time, let's proceed towards the smart board and let's begin today's lesson. Okay, so dear student, we have two chapters, the priceless gift and parts of sentence. So these are the two chapters that we are going to cover today in this revision class. So few MCQs questions we are going to solve and few subjective questions. And from grammar portion, MCQs questions we will solve. So first of all, as we have this particular chapter, the priceless gift, and after a long period of time, we have not read this particular chapter, so let's have a recapitulation. After that we will have a discussion regarding this particular chapter. So प्रथमे आमे टिके डिस्कशन करदबा यार recapitulation टिके करदबा. So Mr. Gupta, an Indian, once went to a vegetarian restaurant in the city of London. The London रो गोटे शहर रे गोटे vegetarian restaurant को मध्याह्न से लंच समय थिला. Mr. Gupta से vegetarian restaurant को प्रवेश करथिले. You found lots of people eating and drinking there. तो सेठी बहुत जण लोकंकर गहली थिला एवं से माने खाउथिले एवं पानीय पिउथिले. He sat at a corner table. तो से चूज करथिले गोटे corner table को and skimming through the newspaper. गोटे newspaper को से निरीखिकी देखिथिले पढिथिले. He noticed a very young girl. तो सही समय से देखिबा पाइले गोटे young girl giving him a sad look. ताको गोटे sad look बा दुख भंगी चाहणी रे देखुची. While leaving, she asked the cashier whether he was an Indian. तो जीवा समय रे से झियोटी कैशियर को पचारिथिला से जणे भारतीय की बोली. And then look at him again. एवं आउ थरे तांकु देखिकी से होटल को बा से रेस्टोरेंट को छाड़ीथिला. After finishing his lunch, Mr. Gupta asked the waiter about the girl. तो लांका लंच चलला परे Mr. Gupta मध्य वेटर को पचारिथिले से झियो विषय रे. He was told that she usually come to the restaurant on Saturdays. एवं वेटर टी तांकु जणैथिला जे से प्रत्येक सैटरडेज रे से रेस्टोरेंट को आसी थाए. That is on pay days only. एवं से जो सैटरडेज दिन गुडाक थाए सेटा पे डे से दिन रे ताकु पावना मिली थाए बोधे सेति पई से दिन रे से आसी थाए. The girl seems to be extremely poor and so he took pity on her and wanted to help her. एवं झियोटी देखा जाउथला एक्सट्रीमली गभीर भाबरे से पूरा पूरी गरीब देखा जाउथला एवं सेति पई हमर राइटर एठी इच्छा प्रकाश कले. सो ही टुक पीटी ऑन हर एंड वांटेड टू हेल्प हर. एवं से इच्छा कले ताकू हेल्प करिवे. तांको ऊपर टिका ताकू दया आसिला, यानी से झियो ऊपर तांकर दया आसिला एवं से चाहिले ताकू टिके सहाय्य करि पारंत कि. द नेक्स्ट सैटरडे से झियोटी विषय जानिबा पाई नेक्स्ट सैटरडे रे he went to the same restaurant. सही रेस्टोरेंट को ही से जाइथिले and met the girl there. एवं से झियोटी को से साक्षात करथिले. He greeted her. से ताकू शुभ सकाळ बा जहाँ भी किसी आमे ग्रेटेड करतो से भलिया से ग्रीटेड करथिले and they got talking. एवं ता सामना रे बसिकी से माने कथोपकथन करथिले. She said that her name was Maggie. से तार नाम मैगी कहिथिला. She then told him about her family. से ता फैमिली विषय कहिथिला. Her brother Frankie was a soldier. ता ब्रदर ना थिला फ्रैंकी जी की जने सोल्जर थिला. Posted in India जी की भारत रे कार्यरत थिला.
and her mother was Mrs. Bethy was greatly worried about her brother for not having heard from him for a long time. तो बहुत समय धरी की ताठु किछि मध्य से सुनिया को पाई नथिले यार अर्थ हला फ्रैंकी किछि भी तांकु कन्वे कर नथिला कोनोसी मेसेज पठे नथिला कोनोसी चिट्ठी पठे नथिला सेथि पई ता मां बहुत ओरिड हे जाइथिले she also said that एवं मेगी आहुरी मध्य कहिथिला that her brother was her only guardian एवं से जणे ही अभिभावक थिला जी की सब ए मां एवं भौणींकर सेवा करुथला बा तांकर देखभाल करुथला and she lived with her widow mother Mrs. Bethy एवं ता मां ना थिला मिसेस बेथी जी की जणे विडो थिला यार अर्थ हला विधवा थिला ता बापा मरि जाइथिले Soon they finished their lunch and came as far as the place where Maggie lived. एवं सेमाने लंच सारी की कथा हेबा भितरे सेमाने पळे आसीथिले मेगी रो घर पाखकू. She invited him to their house. एवं मेगी तांकू इनवाइट करथिला तांको हाउस कू. They went in and got into the kitchen. सेमाने घर को प्रवेश कले एवं किचन पाखकू पहुंची जाइथिले where her mother was making cakes to be sold on Saturday's night. एवं मेगी रो मां केक प्रिपेयर करथिले जोटा कि बिक्री करा हबो सेई सैटरडे नाइट रे which is a time of festivity in the poor neighborhood in that poor neighborhood एवं सेई जो गरीब मानकर जो साही थिला बा हमें कहि परिबा जो अंचल थिला तो सेई अंचल रे सैटरडेस रे फेस्टिविटी नाइट यार अर्थ हला पर्व पर्वाणी रो राती आमे कहि परिबा सेठी पर्व पर्वाणी से पालन करथांती एवं से माने मजा मजलिस करथांती एवं यही समय रे माने पिठा बिक्री करिवे ओके नेक्स्ट मेगी देन इंट्रोड्यूस मिस्टर गुप्ता टू हर मदर एवं मेगी यही समय रे मिसेस गुप्ता इसरी मिस्टर गुप्ता जे कि हमर राइटर थिले तांको विषय रे ता मां को जणैथिला एंड द एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एवं से माने उभय उभयंकु ग्रीटिंग्स बा तांकर जहा भी किछि सम्मान देवा नेबा करथिले Mr. Bethy asked him about India एवं एही समय रे मिसेस बेथी जे थिले जी कि हमर मैगी रो मां से भारत विषय रे पचारिथिले especially about the पंजाब विषय रे पचारिथिले where her son Frankie was working as a soldier काहे कि से पंजाब विषय रे पचारिथिले काहे कि ना फ्रैंकी से पंजाब रे सोल्जर ऊपर कार्यरत अछि बाथिला then Mr. Gupta was taken upstairs तापरे मिस्टर गुप्ता को निया जाइथिला upstairs को ऊपर को and they had tea together एवं सेमाने एकाठी से टी बा चा पीथिले मिसेस बेथी saw him a photograph एवं सही समय रे मिसेस बेथी तांको गोटे फोटोग्राफ देखैथिली of her son जोटा के तांको पुअर थिला and the miraculous ring एवं गोटे चमत्कारी मैजिकल बा miraculous ring गोटे चमत्कारी रिंग बा मुदी समाने तांकु देखैथिले which her son had presented to Maggie जोटा कि मैगी को सेटा गिफ्ट रूप रे दिया जाइथिला फ्रैंकी द्वारा ओके they had been told एवं मैगी एवं ता मां को कहा जाइथिला जे that if one concentrated जदी केही भी concentrated रो अर्थ हला एकलय रे निरीखी जदी कि देखिबे on a distance person while gazing into जदी एकलय रे ताकू देखा जिवो concentrate ता ऊपर पूरा लक्ष्य रखा देखा जिवो ध्यान की देखा जिवो concentrated रो अर्थ कोन ध्यान दे जदी जने ध्यान दे कि गेजिंग करिवो एकलय रे चाहिबो से मुदी को दूर रे थिबा लोक उसे देखि परिवो से मुदी रे एहा कहा जाइथिला one would be able to see him केही भी जनकर अति आपणार लोक बहुत दूर रे अछि तो से मुदी को चाहिले देखि परिबे बोली एहा मिसेस बेथिंग को एवं मैगी को कहा जाइथिला but they were sad किंतु से माने दुख रे थिले that they could not see Frankie through the ring कि काहे कि ना से दुख रे से माने थिले काहे कि ना से माने चेष्टा करूथिले मैगी एवं मिसेस बेथी तांको जो गार्डियन अभिभावक एकमात्र जे कि फ्रैंकी जे कि सोल्जर ऊपर कार्यरत थिला पंजाब रे ताकू एतले से माने देखिबा पई चेष्टा करथिले से रिंग रे से माने सक्षम होनथिले देखि पार नथिले दे रिक्वेस्टेड मिस्टर गुप्ता तो एही समय रे से माने रिक्वेस्टेड करथिले मिस्टर गुप्ता को टू ट्राई एंड गेज इनटू द रिंग तो टिके निरीखी की देखिबे रिंग टिकू एंड शो देम व्हाट फ्रैंकी वाज डूइंग एवं से माने ताकू कहिथिले जेहेतु भारतीय माने बहुत भलो थांती तो से कहिथिले जे मिस्टर गुप्ता आपण टिके मुदी को देखिबे ए रिंग टिकू देखिबे एवं फ्रैंकी किभଳି अछि कोन करूछि ता विषय रे तांकू जणाइबे बोली से माने तांकू रिक्वेस्ट करथिले
but Mr. Gupta could not comply with their request. किंतु Mr. Gupta सही समय रे तांकर जो रिक्वेस्ट को पूर्ण करि पारि नथिले काहेकि ना as the ring was no miraculous thing, काहेकि ना से ring से मुदीटी कोनोसी miraculous बा चमत्कारी मुदी नथिला. that was an ordinary ring, काहेकि ना सेटा साधारण ring थिला. ओके डियर स्टूडेंट, तापरे हम नेक्स्ट जिबा. several months later, तापरे एही समय किछि समय अतिबाहित होई जाईछि. किछि मास परे पुणी मिस्टर गुप्ता तांको घर को आसी जंती, मेगी घर को आसी जंती, एंड हा मदर मिसेस बेथी एवं मदर मिसेस बेथी को घर को आसी जंती. बाय देन दे हैड नो न्यूज ऑफ फ्रैंकी, एवं एही समय रे बहुत समय व्यवधान भी हे गलानी, तथापि मध्य फ्रैंकी टू कोनोसी संवाद आसी नथिला. एंड वेर ग्रेटली वरीड, एवं से माने बहुत व्यस्त थिले. एते व्यस्त थिले जे मिसेस बेथी झुरी झुरी, मिसेस बेथी वाज इल इन बेड, मिसेस बेथी रोगाग्रस्त होई सारिथिले. मैगी नाउ अर्ज, तापरे मैगी रिक्वेस्ट करथिला, अर्ज करथिला, गुहारी करथिला हिम टू लुक इनटू द रिंग, आउ थरे रिंग टू देखिबा पाई, एंड टेल हर मदर, एवं ता मां को थरे कहिबे अबाउट द वेल बीइंग ऑफ फ्रैंकी इन इंडिया, जे भारत रे फ्रैंकी भलरे अछि. एभलिया कहिबा पाई मैगी मिस्टर गुप्ता को गुहारी करथिला, अर्ज करथिला टू प्लीज देम, समान को खुशी करेबा पाई. ही वेंट अप टू हर मदर्स बिसाइड्स, तापरे मिस्टर गुप्ता कोन करथिले, से जो मदर मिसेस बेथिंकर बेड पाखु को जाइथिले. एंड टोल्ड हर, एवं कहिथिले दैट हर सन वाज एलिव, जे तांकर पुओ जीवित अछि, एंड डूइंग वेल, एवं भलरे अछि. एट दिस, एही कथा सुनी मिसेस बेथी वाज ग्रेटली रिलीव, मिसेस बेथी भल हो जाइथिले, रिलीफ हो जाइथिला. तांकर जो ज्वर, तांकर जो बेमार, जहाँ भी किछि हमें कहि परिबा रोग उपशम हो जाइथिला. सेवरल डेज पास, एही समय रे किछि दिन पुणी बीती गला. मिस्टर गुप्ता वाज ड्यू टू रिटर्न टू इंडिया, मिस्टर गुप्तांकर भारत को प्रत्यावर्तन बा फेरिबार समय हो सारिथिला. ही वांटेड टू गो टू देम, से चाहुथिले जे मिसेस बेथी एवं मैगी को जाइकी भेट हेबे. ओके, एवं तांकु गुड बाय कहिबे, एंड बाइड देम गुड बाय, बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग. किंतु से जानियो को पाइथिले जे सेही फैमिलीटी, सेही परिवारटी मॉर्निंग रो अर्थ हला दुख रे अछंती. काहे कि दुख रे अछंती? देन एज फ्रैंकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग, काहे कि ना युद्ध रे फ्रैंकी रो मृत्यु हेई सारिछि, युद्ध रे फ्रैंकी को मरा जाइछि. सेही पई फैमिलीटी बहुत दुख रे थिबार मिस्टर गुप्ता जानिले. ही फेल्ट एसएम, से बहुत लज्जित अनुभव कले. कौन पाई लज्जित अनुभव कले? टू सी देम, तांकु देखा करिया पई से लज्जित अनुभव कले. एंड रोट टू देम बाइडिंग देम गुड बाय, एवं से सामना सामनी हेबा पई इच्छा प्रकाश कलेनी, काहे कि ना तांकु लज्जा लागुथला, काहे कि ना से गोटे मिछ कहि देथिले. मिस्टर गुप्ता गोटे मिछ कहि देथिले जे फ्रैंकी भलरे अछि. सेही समय पाखापाखी दिन गुडाकरे ही ए फ्रैंकी मृत्यु हेइथिला. तो एई जो असुविधा पाई, एई जो मिछ कथा पाई तांकु लज्जा लागुथला, एवं से देखा करिया पई इच्छा प्रकाश करनथिले. सेहि पई लेखिथिले गोटे चिठी जे मु भारत प्रत्यावर्तन करिवि. इट वाज हिज लास्ट डे, एवं दिनटी थिला तांकर शेष दिन. सेही समय रे कोन हला में देखिबा. मैगी केम टू हिम, मैगी तांको पाखु को आसीथिला टू से गुड बाय, तांकु गुड बाय कहिबा पई. शी हैड कम टू नो दैट he belonged to Punjab, एवं से जानियो को पाइला जे पंजाब रे रहिबे, काहे कि ना से पंजाब सर्विस रे एंटर करिवार थिला. एंड द फ्रंटियर वेयर फ्रैंकी वाज ब्यूरिड, एवं जो फ्रंटियर बा सीमांत जोटी फ्रैंकी ब्यूरिड अछि, जोटी फ्रैंकी रो समाधि दिया जाइछि, वाज नॉट फार फ्रॉम हिज प्लेस. जोटी मिस्टर गुप्ता तांकर चाकरी बा सर्विस रे से जॉइन करिवे, जोटा कि पंजाब रो गोटे स्थान, सेठू फ्रैंकी रो कबर बा समाधि स्थान बहुत पाखरे, बेसी दूर नुहे, सेटा जानियो को पाइला. सो ही एस्यूर्ड हर दैट ही वुड विजिट हर ब्रदर्स ग्रेव एंड राइट टू हर. एवं एही समय रे मैगी तांकु गोटे सीलिंग देथिला, तमे एटा पढिचो. तो मिस्टर गुप्ता ताकु एस्यूर देथिले जे से निश्चित भाबरे से मैगी रो ब्रदर रो ग्रेव पाखु को बुली जिवे, एवं सेठारु जाइकी ताकु चिठी लिखिबे. ए कथा सुनी कि मिस्टर गुप्ता को प्रति मैगी रो गोटे बहुत कृतज्ञता आसिला. तो एट दिस मैगी थैंक हिम इन अ चोक वॉइस, तार श्वास रुद्ध हो जाउतला, गला रुद्ध हो जाउतला,
कि तथापि मध्य से कहितला थैंक यू. She then gave a ceiling. एटा देखो, she gave a ceiling and asked him to buy flowers and put them on her brother's grave. मु तुमको कहि नथिली ताकू से गोटे सीलिंग देथिला. काहे कि सीलिंग देथिला जेहेतु मिस्टर गुप्ता कहिथिले एश्योर देथिले जे से तार ब्रदर कर ग्रेव पाखकू जिवे सेहिथि पई एठी फ्रैंकी रो जो समाधि ऊपर किछि फूल देबा पई हमरो जो मैगी थिला से गोटे सीलिंग काढिला तार ब्रदर रो ग्रेव रे किछि फूल किणी की देई देबा पई ताकू से गोटे सीलिंग बढ़ाई देला काहाकू ना हमरो राइटर को. ही अगेन एश्योर त सीलिंग टी प्रथमे तो नेबा पई तांकर मन हेउ नथिला किंतु काहे कि ताकू दुख देबे एई जो sacrifice of joy by giving of joy ए जो sacrifice से करूची त्याग से जो करूची गोटे सीलिंग रो जहा को से बहुत परिश्रम करी अर्जन करिथिला तार त्याग प्रतिबदल ताकू बहुत खुशी मिलिबो सेही खुशी को से अटकेई पारिबेनी सेही पई मिस्टर गुप्ता ताकू रिसीव करिथिले एवं ताकू आउथरे एश्योरेंस देथिले ही अगेन एश्योर्ड दैट he would act according to her wishes से तार इच्छा जेमिति सेमिति करिवे एवं ताकू ब्लेस करिथिले and bade goodbye एवं ताकू goodbye बा शुभ विदाय जणाइथिले. तो डियर स्टूडेंट इन दिस वे द स्टोरी केम टू एन एंड. वर्तमान तो समय आसी जाईची. I have 10 MCQs for all of you as this is the revision class. You are going to answer to all those questions whatever I have. So get ready with the let's talk. Question number 1 we will discuss. You have to choose the correct option. Dear student, as you know, from poetry section, prose section, each question is having 1 mark, so choose the correct option. When Mr. Gupta visited Maggie's house after several months, option A, Mrs. Bethy was vexed. Dear students, several months. Option B. Option B. Option B. Selling cakes. नहीं भूली गलनी नहीं बहुत दिन हेगलनी पढिछो भूली गलनी एबे भी कहि सारिची पुणी मने पकोला आउ थरे मने पका. Seriously ill. Right now you are correct. Yes, seriously ill. Yes, correct. तो मिसेस बेथिंग को पाखु जेतेले भूली जाइथिले आउ थरे मिस्टर गुप्ता सेवरल मंथ परे से खोजी काहाकू फ्रैंकी को से रोगाग्रस्त हो जाइथिले सीरियसली इल हो जाइथिले. ओके नेक्स्ट जीवा. In the story, the priceless gift story रे the writer noticed the young girl looking at him when he was vexed. केते बेले से झियोटी तांकू देखुथला माने एक्साइड एक्सप्रेशन रे paying his bill जेते बेले से तांकू से बिल टा पे करूथले skimming through the newspaper जेते बेले से न्यूज़पेपर टी पढुथले talking to the cashier से तो कथा हतला समले ना and entertaining the restaurant entering the restaurant केते बेले झियोटी तांकू देखुथला. ऑप्शन बी गर्ल्स स्कूल उज्जवलपुर. ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस यू आर करेक्ट. स्कीमिंग थ्रू द न्यूज़पेपर जेते बेले से स्कीमिंग करूथिले न्यूज़पेपर को अनेइथिले पढुथिले सेही समय रे सेही झियोटी तांकू देखुथुबार से देखिले. यस यू आर करेक्ट. नेक्स्ट जीवा. क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट. ऑन व्हिच बेसिस केमिति केते व्यवधान रे was Maggie receiving her pay. Maggie को पैसा मिलुथला पाउना मिलुथला मंथली मास शेषरे वीकली वीकर शेषरे डेली प्रतिदिन फोर्टनाइटली 14 बा 15 दिन परे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वीकली. यस करेक्ट. ताकू सैटरडे रे वीकली ताकू पेमेंट मिलुथला. यू आर करेक्ट डियर स्टूडेंट. थैंक यू वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. द क्यूरियोसिटी माने हला जानिबार इच्छा. The curiosity I felt about the girl persisted. मोर जो झियो को जानिबार इच्छाटा persisted हला माने कोन. The online word is similar to dex. Fermented, continue, grew, arose. कोडा हबो करेक्ट आंसर persisted रो मीनिंग. Yes dear. And option C. Option B. Option C. Option C. Yes. Right now you are correct. Thank you. Option C will be the correct answer. Continue. Here persistence means continue. सेटा लागी रहिला
तांकर जो जानिबार इच्छाटा तांको मनरे लाखी रहिला से न जानिबा जाए से छाड़ीबिनी नेक्स्ट जीबी रेस्टोरेंट को बोली से इच्छा प्रकाश कले यार तो नेक्स्ट जीबा क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड मिसेस बेथी आस्क मैगी टू शो मिस्टर गुप्ता एठी मिसेस बेथी कोन मैगी को कहिले मिस्टर गुप्ता को देखेबा पई हर हाउस तांको तांको घर देखिबा पई फ्रैंकी's फोटो फ्रैंकी फोटो देखिबा पई द रिंग फ्रैंकी हैड सेंट द लेटर फ्रैंकी हैड रिटन कोन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी बहुत बढ़िया आंसर दे देला पूरा करेक्ट यस द रिंग फ्रैंकी हैड सेंट जो रिंग टी फ्रैंकी सेंड करिथिला मैगी पाई जोटा की गोटे मिराकुलियस रिंग थिला नाही जोटा को देखिले निरीखिले गेजिंग कले कॉन्सेंट्रेट कले जणे दूर रे थिबा व्यक्ति को सेठी देखि होबो बोली मध्य से लेखिकी पठैतिला मिसेस बेथी को ओके एवं तार भौणी मैगी को ओके सो द करेक्ट आंसर इज द रिंग फ्रैंकी हैड सेंट ओके पांचटा क्वेश्चन बहुत करेक्टली पूरा आंसर दे देलो तुम्हें नेक्स्ट जिबा में क्वेश्चन नंबर 6 को व्हाई वर नॉट मैगी एंड मिसेस बेथी एबल टू सी एनीथिंग इन द रिंग रिंग को देखिबा सत्य मध्य सेतरे किछि मध्य तांको देखा जाय नथिला मिसेस बेथी को एवं मैगी को काहे की दे वर नॉट इंडियंस काहे कि ना समाने भारतीय नथिले द रिंग वाज फेक रिंग टी मिछर थिला द रिंग वाज एन ऑर्डिनरी रिंग रिंग टी साधारण रिंग थिला दे डिडंट हैव द मैजिक तांको कोनोसी कौतुक बा मैजिकल पावर नथिला दे डिडंट हैव द मैजिक STG Girls Mission High School. Dear student, take your mic and answer. Option B. Option B. Option B. Option B. Option B भी होगा. Option C. ये कहिलो. ये correct answer ता होती है क्या? Option C जी कहिलो. Option D. Option D होगा. D न हबनी ऑप्शन सी जे कहलो तार आंसर करेक्ट हो ओके सो द रिंग वाज एन ऑर्डिनरी रिंग एटा हबो करेक्ट आंसर काहे कि ना सेटा कोनोसी उटे मिराकुलियस रिंग नथिला सेटा उटे ऑर्डिनरी रिंग थिला ओके सेही पई समान देखि पार नथिले तो एटा हिजबो करेक्ट आंसर एवं एटा किए जाने को पाइले मिस्टर गुप्ता जाने को पाइले ओके किंतु से कहिलेनी जे एटा ऑर्डिनरी रिंग बोली काहे कि ना से तांकर जो ड्रीम थिला सेटायर करिया पे चाहु नथिले नाइ कि एटा मने पकेबो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जीवा व्हाई डिड मैगी वांट टू नो व्हेन द नरेटर विल रीच इंडिया मैगी केबे सॉरी मैगी काहे की जानिया पे चाहुथिला जे हमर जो नरेटर अछंती राइटर अछंती केबे भारत को पहुंचीबे बा भारत रे केबे पहुंचीबे तार काहे की जानिया को इच्छा हला ऑप्शन शी वाज वरीड अबाउट हिम से तांको प्रति बेसी वरीड थिला शी वांटेड हिम टू सेंड हर ब्रदर सम फ्लावर्स कहीं ना से तार भाई पे किछि फ्लावर्स पठाया पे चाहुथला शी वांटेड टू गो टू इंडिया टू से मध्य इंडिया को जीवा पे चाहुथला ऑल द अबव ये सब आंसर हबो को एटा उटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी वेरी गुड डियर यू आर करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर शी वांटेड टू हिम टू सेंड हर ब्रदर सम फ्लावर जेहेतु से तार भाई पाई किछि फ्लावर्स पठाया पे चाहुतला तार भाई रो समाधि ऊपर सेटा दिया जिवो तो सेहिथि पाई से इच्छा प्रकाश करूतला जानिबा पाई जे तमे केबे भारत को जाउचो केबे पहुंचीबो सेठी बोली से पचारिथिला हमरो राइटर को नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट डिड मैगी टेक आउट ऑफ हर पॉकेट एंड गिव इट टू मिस्टर गुप्ता मैगी ता पॉकेट रो कोन बाहर कर सिलिंग एवं वेरी गुड यस करेक्ट वेरी गुड करेक्ट डियर स्टूडेंट यू आर करेक्ट वेरी गुड थैंक यू तमे जो 10टा क्वेश्चन मु सेट करथली आंसर दे देलो नै कि आ सॉरी आ दुटा अछि बाकी अछि जीवा में व्हाट डिड मैगी रिमाइंड मैगी कोन मने पकेइथिला मिस्टर गुप्ता को कोन मने पकेइ दैथिला टू डू व्हाइल बाइडिंग हिम गुड बाय टू बाय फ्लावर्स फॉर हर ब्रदर्स ग्रेव टू ले फ्लावर्स ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव नॉट टू लूज द सीलिंग टू राइट टू हर कोन मने पकेइ दैथिला to write to her option D very good correct absolutely correct एटा मु भूल करिवा बोली भाबुथली किंतु करेक्ट कर देलो बहुत बढ़िया
से चिठी लिखिबा पई भूलिबोनी बोली कहिथिला ताकू मने पकई देथिला नै सभा शेषरे आ गुड बाय कहिथिला मिस्टर गुप्ता वाइप्ड अ टीयर फ्रॉम हिज आईज व्हेन तांको आखिरु लुह झरी जेथिला ऑप्शन लुह सी पोछि देथिले ऑप्शन ऑप्शन सी सी ऑप्शन सी कोन अछि ही टुक लीप ऑफ मैगी एंड हर मदर मु थरे ऑप्शन गुडा पढी दिए तापर तमे कहिबो आंसर ही हर्ड ऑफ फ्रैंकीज डेथ ही सेड गुड बाय टू मैगी he took leave of Maggie and her mother he left London for India एथरु को ऑप्शन करेक्ट हबो केते बेले से तांकर लुह को पोछि थिले तांकर लुह बाहरी पड़िथिला से पोछि थिले केते बेले से कहिथिले को आंसर he said goodbye to Maggie option very B good right now you are correct yes right now you are correct केते बेले से कहिथिले गुड बाय मैगी को गुड बाय बोली कहिथिले सही समय तांको आखिरु लुह बाहरी पड़िथिला एवं से पोछिथिले जोटा मैगी तो देखि नथिला मैगी पळै सारिथिला से समय रे किंतु एई जिंसटा एईटा होची करेक्ट आंसर जोटा की ही सेड गुड बाय टू मैगी ओके याकू भलो की पढिबो एमसीक्यूज गुडा बहुत इंपोर्टेंट प्रत्येक लाइन रो आसी पारे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट तमन को पई एग्जामिनेशन रे 2.5 मार्क्स रो मध्ये दीटा क्वेश्चन आसी थाए तो एई चैप्टर मध्ये आसीबार चांस अछि व्हिच यू नीड टू राइट विद इन 25 वर्ड जोटा कि तुमको 25 वर्ड्स रे लिखिबार अछि I have two questions here and we are going to discuss it. What made Mr. Gupta curious about the young girl? What made Mr. Gupta curious about the young girl? Mr. Gupta करो जानिबार जो इच्छा curiosity जोटा curious सेटा कोन पई जागृत होइतिला कोन पई मिस्टर गुप्ता करो curiosity जागृत होइतिला से young girl प्रति anyone you will try or I will show the answer Tudalaga Government High School, boys or girls, you can answer. Do you want to answer? Ujalpur Government High School students, do you want to answer? Okay, I am going to show you the answer. Mr. Gupta notice. Mr. Gupta notice करिथिले जे गोटे young girl looking at him ताकू देखुची when he went to have his lunch in a vegetarian restaurant and especially when he was skimming through the newspaper जेते बेले से न्यूज़पेपर टी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट रे खाइबा समय रे जाइथिले एवं स्किमिंग करथिले सेही समय रे गोटे झियो तांकू देखुथिला द गर्ल्स लार्ज आई गर्ल्स रो से झियो रो आखि दुटा लार्ज थिला एवं सेही बड़ बड़ आखि रे सैड एक्सप्रेशन थिला हेड ए सैड एक्सप्रेशन दुख भरा चाहानी थिला एज शी वाज लिविंग जेते बेले से झियोटी लिविंग करूथिला से रेस्टोरेंट को छाडी जाउथिला मध्य she asked the cashier से कैशियर को पचारला कहा विषय ना समथिंग अबाउट मिस्टर गुप्ता से मिस्टर गुप्ता को विषय पचारिथिला एवं से जो क्षण वॉइस रे पचारिथिला मिस्टर गुप्ता को कान को से किछि गुणगुण शब्द मध्ये आसीथिला लुक एट हिम वन्स मोर एंड लेफ्ट एवं जीवा समय आउ थरे पुणी देखिथिला एई जो न्यूज़पेपर से पढिबा समय तांकू देखिबा पुणी से खाई सारी की जीवा समय रे कैशियर को मिस्टर गुप्ता को विषय पचारिबा पुणी पूरा पूरी लिविंग करिबा समय आउ थरे पुणी देखिबा मिस्टर गुप्ता को एई जो इंसिडेंट दिस इंसिडेंट्स मेड मिस्टर गुप्ता क्यूरियस अबाउट हर एई इंसिडेंट एई घटनाटी मिस्टर गुप्ता को ठीके से झियो विषय जानिबा पई क्यूरियस जानिबार इच्छा से झियोटी विषय प्रकाश करिबा पई इच्छा हला तांकर ओके डियर स्टूडेंट दिस इज अ वेरी good question so you should prepare such kind of question next out a question achi what did mrs bethy say about saturday's night mrs bethy saturday's night bisore kon kahithile ame tike dekhi deba na mrs bethy said that mrs bethy kahithile that saturday night is the time of festivity saturday night hochi पर्व पर्वाणी रा राती इन द पोर नेबरहुड से जो तांकर जो जनबसति थिला तांकर जो रहिबा स्थान थिला तो से जो पड़ोसी माने तो गरीब थिले तो से मानको पई सैटरडे नाइट ता थिला फेस्टिविटी माने पर्व पर्वाणी रा राती मजा मजलिस माने करथिले दिस इज द टाइम when the people are able to spend जेहेतु समाने वीकली तांकु मिल जाउतला पाउना तो सेही दिन समाने स्पेंड करि पारुथिले किछि पैसा a little from their weekly wages तांकर जो wages माने हला पारिश्रमिक पाउना जो तांकु मिलुथला
सेथुरु समाने किछि स्पेंड बा सेथरे किछि समाने खर्च करि पारुथिले ऑल काइंड्स ऑफ थिंग एवं सेही दिन राति रे विभिन्न प्रकार जिनिस आर सोल्ड सेठी बिक्री करा जाउथला ऑन सैटरडेज एंड द स्ट्रीट्स वेयर मोर क्राउडेड एवं रास्ताटी सेही जो सैटरडे दिनर रास्ताटी रास्ता गुडाक सब पूरा जनगहली पूर्ण रहुथला ओके क्राउडेड रहुथला ओके so dear student in this way I have covered these are the two short questions we can say 2.5 marks two questions I have covered which we are going to answer whenever it will ask to you in the examination एतले तुमको पचरा मध्ये जिवो एभली आंसर दबो तापरे 5 मार्क्स रो मध्ये क्वेश्चन पचरा जे था एग्जामिनेशन रे तो एई चैप्टर मध्ये पचरवार चांस अछि तो डियर स्टूडेंट सेही पई किछि दीटा क्वेश्चन मु आनि त मन को पई प्रथम क्वेश्चन हला डिस्क्राइब द राइटर्स फर्स्ट मीटिंग विथ द गर्ल राइटर को प्रथम साक्षात झियो को सहित यार अर्थ हला झियो को खाली देखिबा नुहे झियो को सहित कथावार्ता हेबा तो प्रथम कथावार्ता सेही जिंसटा तमे लेखिबो ना केंति लेखिबो आमे टी देखिबा तो राइटर मीट द गर्ल एट द रेस्टोरेंट राइटर झियोटी को रेस्टोरेंट रे देखा करथिले he went up to her से तांको पाखु को जाइथिले and took the chair opposite her एवं तांको सामना रे से जो झियर सामना रे ही चेयर टी को से रखिथिले एवं सेत्रे बसी पड़िथिले he wished her a good afternoon ताकू गुड आफ्टरनून जणैथिले ग्रीट्स करथिले he then introduced himself से निज विषय कहिथिले and started a conversation with her एवं से एही परिभाबरे conversations बा कथोपकथन स्टार्ट करथिले the girl then told about him all about herself the girl then told him तापरे झियोटी तांकू कहिथिला all about herself से झियो तार निज विषय सब किछि कहिथिला एंड हर फैमिली ता फैमिली विषय मध्ये कहिथिला तो एया थिला तांकर प्रथम मीटिंग ओके so such kind of question if it will ask in the exam that is for 5 marks 50 words you have to write ठीक है बेसी लिखिबो 50 words पर्यंत तुमको लिखिबार अछि ओके तो ट्राई करिवो सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करिवा पई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखिबा पई and there should not be any spelling error so practice it every time okay तो तमे प्रैक्टिस करू थाओ एग्जाम तो बहुत क्लोज हो गलानी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड नॉट मिस्टर गुप्ता हैव द हार्ट टू मिस्टर गुप्तांकर से भलिया हृदय काहे की हेई नथिला इच्छा प्रकाश से काहे की कर नथिले टू टेल द मदर एंड द डॉटर दैट द रिंग वाज नॉट ए मिरेकुलस थिंग मु तुमको ऑलरेडी कहि सारलेनी जे मिस्टर गुप्ता प्रथम जानिया को पाइले से रिंग रे कोनोसी मिराकुलस थिंग्स नाही से रिंग टी गोटे ऑर्डिनरी रिंग थिला गोटे साधारण रिंग थिला किंतु तांकर हृदय काहे की बाधा सृष्टि कला से काहे की किछि कहि नथिले जे एटा गोटे साधारण ऑर्डिनरी रिंग बोली बा एथरे कोनोसी मिराकुलस थिंग्स नाही बोली से काहे की कहि पार नथिले तार आंसर आमे टिके देखि देबा तो तार आंसर कोन अछि न मिस्टर गुप्ता हैड ग्रेट कंसिडरेशन ग्रेट कंसिडरेशन अर्थ हैला एटी बहुत दया परवश होई जाइतिले फॉर द मदर एंड द डॉटर तांको ऊपर बहुत दया आसीथिला तांकर जो ड्रीम थिला तांको पुओ भलरे थाओ सुखरे थाओ हसु थाओ खेलु थाओ ए जो ड्रीम थिला से ड्रीम को से सेटायर करिया पई चाहु नथिले ही डिडंट लाइक एट ऑल से तिले मात्र इच्छा प्रकाश कर नथिले टू सैटर अर्थ होला विच्छिन्न कर देबा सैटर अर्थ होला भांगी देबा द ड्रीम्स तांकर ड्रीम्स को से माने काई भांगीबे माने तांकर ड्रीम को से काई भांगीबे दैट इज व्हाई सेथि पई मिस्टर गुप्ता डिडंट हैव द हार्ट टू टेल देम सेथि पई से तिले मात्र इच्छा कर नथिले तांको हृदय बाधा देथिला दैट द रिंग वाज नॉट ए मिराकुलस थिंग्स and he was not able to do anything से किछि करि परिबेनी किछि देखि परिबेनी काहे कि ना से रिंग टी गोटे मिराकुलस रिंग नुहे गोटे साधारण रिंग एया कहि पार नथिले से तांकर कथा को से रखि पार नथिले मिसेस बेथी एवं मैगी पाखरे काहे कि ना से चाहि नथिले तांकर जो स्वप्नटी भांगी चुरमार हे जाओ एवं तांको दुख पहुंचाओ okay dear student so such kind of question it may also ask to you so in this way I have covered the first targeted chapter that is the priceless gift second I'm going to discuss with you another particular chapter another interesting chapter that is parts of a sentence dear student tome देखुथबो एठी गुटे डायग्राम करा जाईछि ना कोन ना पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस रे हमें सब्जेक्ट भी पढिथिले प्रेडिकेट भी पढिथिले ता सहित जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये मध्य आसी होउछि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस रे
जेमिति नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन प्रिपोजिशन कंजक्शन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब ए विषय से पर्टिकुलर चैप्टर तमे माने पढिथिलो जोटा कि ग्रामर रो प्रथम चैप्टर तो आज तो ये सब को आउ थे पढ़ार समय नहीं यू हैव ऑलरेडी लर्न वी हैव ऑलरेडी टॉट सो लेट्स हैव ए डिस्कशन तो आमे वर्तमान गोटे डिस्कशन करवा आउ 10टा एमसीक्यू मु नेछि 10 मिनिट पुनी बाकी अछि आमे ट्राई करवा आउ 10टा किछि सैंपल क्वेश्चंस डिस्कशन करवा जोटा कि एग्जामिनेशन रे से भलिया क्वेश्चन पचाइबा चांसेस अछि तो चूज द करेक्ट ऑप्शन वर्तमान समस्त रेडी हे जाओ यू विल आंसर टू ऑल दिस 10 क्वेश्चंस वर्तमान आउ 10टा क्वेश्चन सहित मु आसी तमे आंसर करबा को चेष्टा करो ठीक है मने पकेबा को चेष्टा करो ठीक है रिवाइज हे जिवो तमरो फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल प्लीज एटी गोटे सेंटेंस अछि देखो टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल प्लीज मते सैनिक स्कूल रो रास्ता टिकु कहि दियो बा बतै दियो प्लीज दया करी टेल मी द वे टू सैनिक स्कूल पिक द प्रेडिकेट एठी प्रेडिकेट ता कोटा जेंति मु कहली गोटे सेंटेंस रो गोटे पार्ट सब्जेक्ट थाय आ गोटे पार्ट प्रेडिकेट थाय सब्जेक्ट पार्ट ता तमे जानिछो एवं प्रेडिकेट पार्ट ता तमे जानिछो तो एठी किंतु दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमको देखा जीवनी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट एठी कोन अछि प्रेडिकेट ता एठी अछि तो प्रेडिकेट ता कोन मते कुह मु ऑलरेडी हिंट्स रे आंसर ता देई सालेनी तो मते कुह एठी प्रेडिकेट पार्ट ता कोटा टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल प्लीज वसुंधरा हाई स्कूल टेक योर मीक एन आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन बी the way नाइ डियर स्टूडेंट एटा गोटे पूरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमें कहि परिबा आउ थरे चेष्टा करो विवेकानंद हाई स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम विवेकानंद हाई स्कूल यू ट्राई चेष्टा करो देखिवा किए कहि पारुछो को स्कूल रो स्टूडेंट माने कहि पारुछंती हमें टिके देखिवा आज ई क्वेश्चंस ता टिके टेक्निकल अछि को चेष्टा करो टेल मी द वे टू द टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल नहीं कि एटा भी हबनी एटा भी इनकरेक्ट हेल आउ थरे चेष्टा करो आउ थरे चेष्टा करले हे जिवो तीटा ऑप्शन कटि सलानी ऑप्शन सी हबनी डियर स्टूडेंट someone has already told but I told that will be not ऑप्शन ए ऑप्शन ए भी हबो ऑप्शन ए भी हबो ऑप्शन ए गोटे ऑप्शन रहिला गोटे ऑप्शन रहिला ताको कहि दियो तमे आंसर को अब वेरी गुड टी नहीं जा only one option left and that is which option Upendra High School ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी right now you are lucky fellow to get a good ऑप्शन डी very good yes very good you are so lucky काहे ना गोटे ही ऑप्शन बची थिला एवं टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल प्लीज ए टोटल सेंटेंस टी हिजबो ही प्रेडिकेट ए टोटल सेंटेंस टी हिजबो प्रेडिकेट काहे कि ना डियर स्टूडेंट एठी जो सब्जेक्ट ता अछि सेटा वीह हे कि अछि से देखा जाउनी से सब्जेक्ट ता हला यू से सब्जेक्ट ता हला यू यार अर्थ हला यू टेल मी द वे टू सैनिक स्कूल प्लीज एठी यू दा हला सब्जेक्ट और बाकी जहां रहि गला टेल मी द वे टू द सैनिक स्कूल प्लीज ये सब हे गला प्रेडिकेट सेही पई टोटल सेंटेंस टी हला प्रेडिकेट ओके तो एटी यू हला सब्जेक्ट एवं ये जो सेंटेंस तो तुमको देखा जाउची ये सब होची प्रेडिकेट वेरी वेरी टेक्निकल such kind of questions are there in the exercise work ताकू प्रैक्टिस कर दबो देखो कंफ्यूजन रे तमे पढुछो ओके तमरो कोडी डाउट होची मु मार्क कर देली तो तमे एटा प्रैक्टिस करिवो ए एक्सरसाइज रो सब क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच सर पिक द सब्जेक्ट एटी सब्जेक्ट कोड एटा भी टेक्निकल अछि आई यू थैंक यू सर आई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड करेक्ट मु भाबुतली ए आंसर दे परिबोनी कहि कि ना प्रथम क्वेश्चन रो आंसर तम माने टी कंफ्यूजन पड़लो किंतु तम माने आंसर दे देलो थैंक यू वेरी मच रो अर्थ हला मु तमको कहूची आई थैंक यू वेरी मच सर यार अर्थ हला जणे पर्टिकुलरली कहूची आई थैंक यू वेरी मच सर एडी आई देखा जाउनी किंतु आई एठी सब्जेक्ट अछि एंड यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट दैट्स व्हाई वेरी गुड आई विल से वेरी गुड टू यू सो एठी सब्जेक्ट हे जिवो आई नेक्स्ट आउ जीवा 8टा क्वेश्चन अछि समय बहुत कम मिस्टर जॉन सेल्स वेजिटेबल डेक्स इज अ ग्रीन ग्रोसर एडी को प्रोनाउन एप्रोप्रिएट हो टिके देखिले छुए
को pronoun appropriate हबो correct हबो Mr. John sells vegetables Mr. John's गोटे पुओ ना झियो obviously पुओ तो को pronoun appropriate हबो जल्दी चिन्ह answer to me Shata Sangi Government Girls High School option A yes your answer is correct very good student yes correct the turtle moves slowly here the online word is A or index is जो online word टी अछि गोटे कोन noun verb adverb adjective answer दियो फटाफट quickly answer me dear student जल्दी आंसर करो विवेकानंद हाई स्कूल ऑप्शन डी हबनी डियर स्टूडेंट स्लोली ना तुम भूल करूछ ऑप्शन डी हबनी आउ टिके चेष्टा करो हेमगिरी हाई स्कूल स्टूडेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एटा हबो एडवर्ब यस स्लोली तो स्लोली होउची गोटे एडवर्ब ओके एडवर्ब ऑफ मैनर में कहि परिबा नेक्स्ट जीवा My brother lives Dex New Delhi. Mo brother कोडी रहंती ना न्यू दिल्ली रे रहंती. Choose the correct preposition. Option A. Very good. पूरा correct. Next. Yes. Correct, dear student. I go to school Dex foot every day. Choose the correct preposition. एठी पुनी को preposition लागिवो. I go to school Dex. Option B. On. Option B. On. Very good. Excellent. Yes. Correct. बहुत बढ़िया आंसर दे देलो हेल्प हिम चूज द सेंटेंस टाइप इट इज ई सेंटेंस टा कोटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एटा को टाइप रो सेंटेंस हेल्प हिम इंपेरेटिव करेक्ट ओके एक्सक्लेमेटरी ओके सेकंड क्वेश्चन भी आंसर दे देलो हाउ इंटेलिजेंट सी इज एटा एक्सक्लेमेटरी कहलो नाही वेरी गुड ठीक अछि एडवांसली यू हैव आंसर तो तमे माने बढ़िया आंसर दउछ तो हमर आशा तमे एग्जाम रे भलो करिवो प्रिपरेशन जारी रखो बढ़िया नेक्स्ट दीटा क्वेश्चन लास्ट रहिला several thousands people was the parrot एटा भी टेक्निकल क्वेश्चन अछि द हेड वर्ड ऑफ द प्रेडिकेट अछि एठी रे तमे प्रथमे प्रेडिकेट पार्टी की चिन्ह तापरे सेथि थिबा हेड वर्ड को चिन्ह several thousands people was the parrot head word of the predicate dear student predicate रे head word टी रहिबो verb हला तुमको आउटे हिंट्स मु दे देली काहे कि ना सब्जेक्ट रे रही थाए नाउन ओके तो predicate रे head word टी हला verb तो verb टा कोटा इनडायरेक्टली मु तुमको आंसर भी कहि देली एबे कहो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यस वेरी गुड काहे कि ना several thousands people टी हला नाउन was the parrot hela predicate okay several thousands people hela subject was the parrot hela predicate ebong ei predicate ro was what ti hela head word kahi na eta verb eta सहित ए भलिया गोटे एक्सरसाइज अछि याकू प्रिपेयर करिवो हला ए भलिया क्वेश्चन आसी पारे तो योर आंसर इज करेक्ट डियर वॉच हेबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जीवा जोटे कि लास्ट क्वेश्चन वाओ यू डिड इट द ऑनलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस इज यूज एच A or index, preposition, conjunction, interjection, modifier. Eta kuha. Answer this question, dear student. Wow, you did it. Ei jo wow te ko mu online karichi, ei wow what ti kona? Eta preposition ti, conjunction ti, interjection ti, modifier ti. बहुत easy dear. Answer diyo. Wow what ti kona? Preposition na conjunction. Interjection. Very good. Interjection. Option C. Finally you have answered correctly dear. Thank you. You have answered very nicely. So interjection will be the correct answer. So I came to an end of my today's lesson. I hope this kind of question as we have already discussed, it may help you to prepare further for your examination. So prepare properly for the examination and I have got maximum student you have answered correctly today, so I very much pleased for all of you. So lastly I am showing you the homework part which you have to do and you have to show the answer to your concerned teacher present in the school. So dear student, thank you, have a nice day and do prepare well for the examination.